Into this channel. In this video we will be understanding how we can set up React project. To understand that we require two things. First of all is Node.js and another one is Visual Studio Code. Now we'll start with the setup. First thing that we require is that we require Node.js. Node.js is a runtime environment for the JavaScript that we need. So I will be sharing this link in the description box that you can utilize to install this Node.js inside your system. The moment once you will open this link, it will give you all the options. Like if you have a Windows system, you can go ahead with the Windows installer. If Mac OS, then you can go ahead with the Mac OS installer. I already have Node.js installed in my system, so that is why I will not be continuing with this process. But the moment once you are done installing Node with any of these two links, depending on your system, then you can verify like how. Then now the question comes is that how should I verify like if the node is installed in my system or not, right? So you can open your command prompt if you are having a Windows, or you can open terminal if you are having Mac OS. Okay, once you will open your terminal, then you can just increase its size also so that it's visible. You can simply write down node over here, or you can write down node version hyphen and then version. This will basically return you the version of the node. Okay, if you are not doing this, you can just simply write down node also, and if it is showing you this arrow symbol over here, that means you can understand like okay fine, the node has been installed in your system properly. Okay, so one thing is this one that we would require to make sure that we are installing node in our system before we start with the React project. Another thing that we will be requiring is our Visual Studio Code. So I will be adding this also in the description box. So what is Visual Studio Code is basically it's a code editor that we require. Okay, so whatever the code that we are doing inside React will require this Visual Studio Code. So I will also be installing it. The Visual Studio Code is now installed, and if you will double click on this item, then it will open your Visual Studio Code. Inside this Visual Studio Code, now we can create our React project, and then it will open this Visual Studio Code window. Okay, so now it is basically giving us an option like you can open any folder. आप किसी भी folder को open करके वहाँ पे अपना project create करना start कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे open folder पे click कीजिए, and then it will open up your project directly. Like where exactly do you want to create it? Like for example, if I want to create something inside this one, okay, and I'll create a new folder and I'll give it name as test hook. Okay, and then I will create it, and then I will open this folder over here. Now inside this folder I would like to set up my React project. So now if you want to set up your React project, then you'll have to utilize one command known as npx create react app. Now if you want to utilize that command, आपको अगर वो command run करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टॉप पर आपको टर्मिनल करके एक ऑप्शन दिखेगा. यू कैन ओपन दिस न्यू टर्मिनल. वी कैन एग्जीक्यूट आवर कमांड ओवर हियर लाइक दिस npx create react hyphen app. So now since we have already created this folder, we want to directly execute or create our React application inside this folder only. अगर आप चाहते हो कि मैं इस टेस्ट हुक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूँ यूज़ स्टेट नाम से, फिर उसके अंदर मैं अपना रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा, तो आपको यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखना होगा. ये बेसिकली क्या करेगा, आपका फोल्डर सबसे पहले यूज़ स्टेट फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर आपके एप्लीकेशन को डंप करेगा like this. So it will basically first of all create your user state folder over here. So but we do not want this. What we want is that I want कि इसी फोल्डर के अंदर ही मैं अपना रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर दूँ. विच फोल्डर? माई टेस्ट हुक फोल्डर. आप यहाँ से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं. विच फोल्डर? टेस्ट हुक फोल्डर. जैसे आप इसको एंटर करोगे, either try using a directory name or remove the files listed below. So let's delete this folder from here because you were trying it, and then finally enter. So now it will start creating a React application. Command has been successfully executed. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो वो हमारे को अब नेक्स्ट कमांड्स क्या रन करनी है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि सबसे पहले आपको इस स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, और फिर आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है. तो हम लोग ऑलरेडी इसी फोल्डर के अंदर है, तो आप किस फोल्डर में हो आप यहाँ पे इस जगह पे आप चेक कर सकते हो. तो वी आर ऑलरेडी इन दिस टेस्ट बुक फोल्डर. ओके,
So we can directly execute npm start. npm start क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को अब रन करेगा. कैसे रन करेगा, वो सारे के सारे पैकेजेस, सारे के सारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड वो क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है एक बंडल्ड करके. तो ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे हमारे को कमांड रन करके जो जनरेट हुई है, यूजिंग ऑल दीज फाइल्स एंड एवरीथिंग, npm स्टार्ट कमांड आपके एप्लीकेशन को रन करेगी. ये रन करके आपके एप्लीकेशन को एक लोकल होस्ट 3000 वाले पोर्ट पर एग्जीक्यूट करेगी. नाउ वन मोर कैच ओवर हियर इज़ दैट कि हम लोगों ने जो कमांड एग्जीक्यूट करी थी वो npx create react app एंड देन डॉट करी थी. हमने डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमने फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था. अगर हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट नहीं किया है और हम लोग फोल्डर क्रिएट करके फिर उसके अंदर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग उसके अंदर npx create react app एंड देन फोल्डर का नेम भी दे सकते हैं. ओके, एंड देन लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन ओवर हियर npx create react app, I'll open one more terminal. If I write down npx create react app and then I write down over here as test, इसके अंदर ये entire react application को वापस से generate करेगा. Okay, so over here our application is running now successfully, localhost 3000. ये आपका entire यहाँ पे जो भी UI है वो generate होकर जाएगा और फिर उसके बाद में you can check it also over here, like if everything has happily and successfully, it has completed successfully, then you will get this message that your application has been compiled successfully and then it is being running on the localhost port 3000.